Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. We continue reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text 30. Api chetsu dvaracharo bhajate mam ananyabha sadhur eva samantavya samyak vyavasito hi sa. ट्रांसलेशन एंड परपेट। आंटी, आपको हिंदी में पढ़ना है? हाँ, ओके। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इस श्लोक का सुदुचाराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य वध करता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम वध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो कर्तव्यबद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपनी आध्यात्मिक प्रकृति से पूर्णतः भावित रहता है और कृष्ण भावना अमृत से या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में भी कभी कभी भक्ति है और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतरण चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहाँ तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। यह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावना अमृत की अनुमति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावना अमृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतनी शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल रहता है। किसी भक्त के आदर्श पथ में अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववश शांत उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है,
तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंहा पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हराव नयन चेता वृषमालिनो अपि विराजते मनुष्यः न हि शास्त्रकलक्षित छवि कदाचित तिमिर पराभावता मुपैति चंद्र। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरहे के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कार्य कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तब तक का आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र सुधार नहीं लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। So Krishna is continuing to instruct to Arjuna about the devotee, and now he's telling him even if the pure devotee, one who's fixed in Krishna consciousness, sometimes accidentally he may make a sinful act. Sometimes, but that also by accident. Then if such a devotee in that place, in that condition, should not be considered fallen. If he just continues with his devotional service, he should not be considered. And but not that one misuses this verse, because sometimes people may misuse that Krishna is saying, oh, that you can engage in sinful activity and yet engage in devotional service. No, but Krishna is saying accidental fall down. That sometimes by just the illusion of Maya, because Maya is really very strong, we are after all in the material world, then such activity, if such a um, accidental fall down should be excused, because Krishna excuses it. And the devotee continues with his devotional service without any hindrance. There's no hindrance. The devotee does not need to do any separate prayaschat or, any different kind of activity. He just continues in his devotional service. Prabhupada is pointing out that when a living entity, when on the conditioned platform, has two kind of activities. One is pertaining to the body. Whatever is our situation in society, whatever condition of body we are in, we have duties and we perform that. So this is the swadharma of the body. But there is the swadharma of the soul. That's our spiritual duties. That is devotional service. Devotional service. So uh, for the devotee, the pure devotee, of course, he does everything in in relation to Krishna. All is he has no material activity. He understands that even the body belongs to Krishna, and he is
engaged in always pleasing Krishna. So sometimes the devotee may have an accidental fall down, but Krishna says that this does not qualify him. It does not disqualify, it does not disqualify him. That if the devotee is engaged wholeheartedly in devotional service, then the Lord is in the heart. He purifies the devotee. He takes away even this slight inclination to perform a sinful activity. So Krishna is saying we should not condemn such a devotee. Okay, but not that we make a habit of it, not because Krishna is giving a concession, but not that we misuse this verse, what Krishna is saying. It's just for accident. So Prabhupada is pointing out that one who engages in devotional service is more or less war against Maya, because Maya says, oh, this is my servant. He's serving me since so many long years. She does not want to let the living entity go also. So she also puts on her charms, very strong, to let the living entity continue living in the material world. But in a way, she's also testing how strong is the desire to go back to Krishna. Because she does not want anyone to trouble Krishna. So she makes sure that this living entity really, really is really sincere, really has strong desire to go back to Krishna. Then she lets him go. Okay. Reading on. Shipram bhavati dharmatma shashvat chantim nikachati kaunteya pratijanihi na me bhakta pranashyati. वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न ये उठता है कि संयोग वंश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्मश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो वो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा।
Krishna is saying, even if one devotee, he accidentally commits some activity which he should not, he quickly becomes righteous, because he's continuing with his devotional service. So Krishna is saying, declare it boldly that my devotee never perishes. So the devotee, he has all the good qualities because he's constantly remembering Krishna. He's constantly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And with this, the cleaning process is going on. The heart gets cleaned. All the dirty things in the heart go away. And the devotee, he understands his constitutional position as spirit soul, part and parcel of Krishna. And so he does not have any uh, bad qualities. He has all the good qualities. All the good qualifications are there in the devotee. And he's continuing to think about Krishna. He's continuing to chant the holy name. So the purification process continues to happen because Krishna is in the heart of everyone. He's the Paramatma in our heart, and he helps us take away all the material contamination, our thinking that I'm the body, and our envy and lust and greed and pride and illusion. So that's why Krishna is saying, my devotee never perishes, because Krishna takes care of his devotee. So we are encouraged to continue chanting the Hare Krishna mantra and to purify ourselves, because right now we have forgotten our true nature. By chanting the Hare Krishna mantra, we will be able to be situated in our real nature as spirit souls. Mam hi partha vyapashritya मामा हि पार्थ व्याश्रित्य yepi syu papayonaye ये अपि स्युः पापयोनयः striyo vaishyas tatha shudras स्त्रियः वैश्यः तथा शूद्रः tepi yanti param gatam. अपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम में 2:4-18 कथन है कि अधम योनि चंडाल तथा भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शूद्र भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुण क्षत्रिय और तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल के वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। Krishna is saying, anyone who takes shelter of him,
Doesn't matter which family we are born, which country, which community, which gender. It doesn't matter. Anyone who takes shelter of Krishna can go back home, back to Godhead. Usually because to perform some Vedic rituals, some Vedic ceremonies, you have to be born in a particular family, have certain kind of qualification, certain kind of um, education, or need to be able to chant certain mantras perfectly. But once one comes to Krishna, anyone who comes to Krishna can get the ultimate goal of life. So it is in our best interest that we take shelter of Krishna sooner rather than later. Prabhupada is explaining that there are this Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. So they are like these divisions are there. And then they are the dog eaters. But anyone can engage in devotional service. Anyone can be purified by association with a pure devotee. And therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between lower and higher classes of men. So anyone can get purified in the association of pure devotee. This is the power of association with pure devotee, that it purifies us. And that's the reason the Shastras say, Sadhu Sangha, Sarva Shastra kahe, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi hai. Moment's association with a sadhu gives us perfection. So, anyone can get purified taking shelter of a pure devotee. And even if we are born in sinful families, we've done all sorts of sinful activities, anyone can be accepted in the process of devotional service and can get the highest perfection of life, can get Krishna Prema, can go back home, back to Godhead. There is no restriction, no disqualification. The only thing is one needs to come in contact with a pure devotee, because bhakti comes from bhakta. So anyone taking association of a pure devotee can get perfection. Kim punar brahmana punya. किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या Bhakta rajarasyastatha. भक्त्या राजऋषयः तथा Anityam asukham lokam. अनित्यम असुखम लोक्यम Imam prapya bhajasvama. इमं प्राप्य भजस्वः माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आकर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु जो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है, यही स्पष्ट कहा गया है। अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्य है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्य नहीं है, यह अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्य में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म राजर्षि कुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं
मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय में लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति की एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। So Krishna is saying anyone can approach him and take up the process of devotional service and get perfection. So he's saying, of course, and what to speak of those who are already righteous, they are devotees. And what are they doing? Engaging in devotional service, loving devotional service, coming into this temporary, miserable world. This material world is described by Krishna as temporary and miserable. And most of us may not even realize it. We may say, why is it miserable? It's so much enjoyment. There's so many nice things to do here. But if we analyze, everything perishes with time. Even our enjoyment, it goes away with time. It's temporary. So Krishna is saying, engage in devotional service to me. Anityam asukham lokam. So someone may say this world is false, but this world is not false. We are very much right here in this world. We are very much right here in this body. So it's not false, but it is temporary. Our time in this body is temporary. The manifestation of this material world is temporary. At one time, it is dissolved, annihilated. That's why it is temporary. It's not false. There's a difference between temporary and false. But there is another world which is eternal. That is the spiritual world, the Vaikuntha sky, where there are so many Vaikuntha planets. And once we go there, we have no more birth, death, old age, disease. That world is a place full of bliss, happiness. It is eternal, Sat Chit Ananda. Eternal, full of bliss, full of knowledge. So Krishna is telling Arjuna also, you take up devotional service. Take up this process of devotional service and quickly come back home, back to Godhead. Krishna is our Supreme Father. No parent likes to see their children unhappy. And Krishna understands that we can truly be happy when we are in the spiritual world. Why? Because we are spirit souls. Just like we take a fish out of water, the fish struggles. It's not in its natural environment. And we may say, oh, the fish is struggling because it wants a nice massage, or the fish is struggling because it wants to eat gourmet food, or let's take him for nice music. But the fish continues to struggle. Why? He just needs to go back in the water. Similarly, we are spirit souls. Being in this material body is a temporary situation, it's an artificial situation for us. And we need to go back home, back to Godhead, to be eternally happy. And Krishna wants us to come back quickly. For this reason, he has left behind for us the instructions of Bhagavad Gita. He's left behind for us Srimad Bhagavatam. And he came 500 years ago as Lord Chaitanya to encourage us to take up the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In this Kali Yuga, there is no other process of liberation than chanting the Hare Krishna mantra. The Shastras are declaring this. So Krishna is telling us, take up quickly this devotional service. Be peaceful in this life. At the end of life, come back home, back to Godhead. Is that okay?
मन्मना भव मद्भक्तो मन्मनः भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजी मामं नमस्कुरु माम् एवेष्यसि युक्त्वैवम् मम एव येष्यसि युक्त्वा एवम् आत्मानं मत्परायणा। आत्मानं मतपरायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मषग्रस्त गृहस्थ भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना अमृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का भी सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वो स्वयं है और परम है। जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरित्रामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41 to 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदो अहम नेश्वरे विद्यते कंचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग असुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में प्रेम में उनका चिंतन करे। यदि भक्ति है, उसे चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रमाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रमाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उससे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण ही पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं और वहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उससे अर्चना विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है।
भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी, ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमात्मा की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है, वो सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण रूपी चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कर्म हो जाएंगे और शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। शुद्ध भक्त के पतन का वास्तव में कभी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना अमृत पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा उसे कृष्ण रूपी परम प्रसाद प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह ज्ञान की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। This is the most confidential instruction Krishna is giving in the Bhagavad Gita. How the 9th chapter is the most confidential knowledge. In this most confidential chapter, this is the most confidential verse. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisances to me and worship me. Being completely absorbed in me, Krishna, surely you will come to me. So Krishna is telling us what to do. He's telling what to do. That we can get liberated from this material world by becoming Krishna conscious. Engage the mind always thinking of Krishna. Our mind, we'll see, is always thinking of something. Krishna is saying, think of me. Become my devotee. Offer obeisances to me, he's saying, and worship me. So sometimes people say, oh, you have to think of something which is inside Krishna, outside Krishna, within Krishna, without Krishna. But here Krishna is clearly saying, engage your mind in thinking of me, worship me. Krishna is not saying think of something inside me or outside me or beyond me or think of my knowledge. No, he's saying think of me. We accept what he's saying. That's the direct meaning. We just accept it without misinterpreting. We need not misinterpret what Krishna is saying, or rather, we should not misinterpret. We just accept what Krishna is saying. So, Krishna is a person. There is no difference between Krishna's body and Krishna himself. We are inside this material body, so there is a difference between our body and ourself, the soul. There's a difference right now. But Krishna, his body is transcendental, is spiritual, Satchidananda. He does not have a material body. So there's no difference between his body and his soul. That's him. Like all the living entities in the spiritual world, they have no material bodies. They all have spiritual bodies. Krishna, his body is transcendental. He's not an ordinary human being. He's the absolute truth. So when he's saying, think of me, we think of Krishna. Two arms, two lotus eyes, he's holding the flute in his hands. And he's wearing a peacock feather. His complexion is that of a newly formed thundercloud. He's surrounded by all his devotees, the gopas, the gopis, the cows, the peacocks.
So this is Krishna. Krishna is saying, think of me. So there's no difference between Krishna and his body. Krishna himself and his body is the same. We just need to understand this. This point here, Prabhupada is saying, Krishna's uncle Kans, he was also thinking of Krishna, but he was always thinking he wanted to kill Krishna. But like this kind of thinking is not going to help us, that we want to kill Krishna. No, we need to think of Krishna with bhakti, glorify Krishna. Not wanting to kill Krishna, but wanting to glorify Krishna with devotion, with bhakti. Hearing about Krishna from Bhagavatam, Bhagavad Gita, hear from the devotees, because the devotees understand Krishna. So when we hear about Krishna from the devotees, we will be able to understand Krishna. So that's what Prabhupada is saying, learn from bona fide teacher. Learn from bona fide teacher. So Krishna, and the more we hear from the pure devotee, the more we will be able to understand that Krishna, his body is not material. His body is Sat Chit Ananda. And by hearing from the devotees, we will become devotee. We will be able to understand Krishna. If we do not hear from the devotees, we will not be able to understand Krishna. Why is it so important to understand Krishna? Krishna says, Janma karma chame divyam, evam yoveti tata. He says, try to understand my form, my appearance, my activities are all transcendental. And by understanding this, you get liberation, no more birth and death. Go back home to Golok Vrindavan. So, for this reason, we should, because the mind always needs something to think of. So Krishna is saying, think of me, think of my eternal form. With conviction in his heart that Krishna is the supreme, and engage himself in worship. So, worshipping Krishna, offering obeisances to Krishna. There's so many temples, visiting the temple, offering our obeisances, offering our services to Krishna, or installing the deity at home, offering the deity the service at home. So the devotional service, it begins by hearing and chanting. And there are 9 processes of devotional service. It's called Nava Anga Bhakti. Begins by hearing from the devotees, from Bhagavatam, from Bhagavad Gita, and chanting Krishna's names, chanting Krishna's glories. What's the highest achievement of human society? Pure devotional service. We may think of, oh, my highest achievement is if we have all different goals. Maybe it may be a health goal, it may be a wealth goal, it may be to, a personal development goal, so many different goals. And we may achieve those, and we feel very, very good about them. Yes, it's good. It's good to have those. But what's the highest achievement? Pure devotional service. Engaging in activity for pleasure of Krishna. That is pure devotional service. Following in the footsteps of the previous acharyas. So, pure devotional service means there is no desire for material gain, no desire for liberation. There's no desire for mystic yoga, ashtasiddhi. So one may say, oh, but I have all these desires. Then what can I do? Maybe I have material desires. I have desire for mystic perfection. I have desire for liberation. Bhagavatam says, doesn't matter. Still worship Krishna. Because Krishna will not only fulfill our desire, but will also give us perfection.
will remove us, take us out of this material world, will bring us home, back to Godhead. So the pure devotee is always engaging in service of Krishna. Someone may be attracted to Krishna's features of Brahman or Paramatma, but the pure devotee is always engaged his mind in thinking of Krishna, his personal form. Krishna is a person, the most beautiful person. So, Prabhupada is pointing out that there is a poem in which poem is saying that one who's engaged in worship of demigods is unintelligent and cannot achieve the supreme award of Krishna. Why? Because when one worships the demigods, one gets, yes, a lot of blessings, a lot of mercy, a lot of benedictions, but those will still keep one in the material world, will bring us to the heavenly planets. But the heavenly planets are also in the material world. After the time to live in the heavenly planet finishes, one will again come to the earthly planet, again create new karma, or may even take a body of animals or hellish life, depending on which cycle we are in of our karma. One cannot get out of the material world by worshipping demigods. So if we really want to get out of this material world, we are really looking for liberation, really looking for perfection, we need to engage in devotional service, which begins by hearing and chanting. So one may take up devotional service, but because we have past conditioning, we may still have, habits, but we continue engaging in devotional service, continue hearing and chanting, continue hearing and chanting. Krishna will help us. And for the pure devotee, Krishna is personally taking care of the pure devotee. So one should take up this process of Krishna consciousness, live happily in this material world, and at the end of life, go back home, back to Godhead. And that's what Prabhupada is saying, take directly to Krishna consciousness, happily live in this material world, because that's what we want to do. We want to live happily in this material world. So take up Krishna consciousness, live happily in the material world, and at the end of life, go back home, back to Godhead. That brings us to the end of the 9th chapter. Any questions or comments? Okay, chapter 10, the opulence of the Absolute. We begin it. Sri Bhagwan Uvacha. Sri Bhagwan Uvacha. Bhuya eva mahabaho. Bhuya eva mahabaho. Shunu me paramam vacha. Dinu me param vachah. Yatte ham priya manaya. Yatate aham priyamanaya. Vakshyami hita kamyaya. Vakshyami hita kamyaya. श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो षड ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग ये से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे
तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्यों का भी वह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इनके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अतः इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावना अमृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। So Krishna in the earlier chapters spoke about his different energies. The three main energy we say: material energy, the spiritual energy, the marginal energy, and how these energies are working, how the material world, cosmic manifestation, is his material energy, how the spiritual world is his spiritual energy, and how we, the Jivatmas, are here in this. We are his marginal energy, the Jivatma, because we are sometimes in the material world, sometimes in the spiritual. We are influenced by these different energies. That's why we are called marginal. And in this chapter, Krishna is going to tell him about his vibhuti, specific opulences. We are going to hear about Krishna's opulences. So the dictionary meaning of the word Bhagavan by Parasara Muni is one who has all opulences, all 6 opulences in full. So what are the 6 opulences? Auntie Rashmi, kya hai 6 opulence? Hmm? हाँ, आप रिपीट करो। वो जो 6 ऐश्वर्या क्या है हाँ, भगवान? ये है, हाँ ये है शक्ति, ये है शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग। हाँ, और कृष्णा को ये फुल है. We हाँ, may have सारे a हैं। certain degree. हाँ, हमें हाँ, थोड़े डिग्री में हो सकते हैं, पर कृष्णा को कंप्लीट डिग्री में है ये सब. हाँ, तो सारी चीजें कृष्णा हैं। को इसलिए कृष्णा को सब भगवान कहते हैं. It's the supreme personality of Godhead. All the हम्म, great sages, all the authorities accept Krishna as the supreme Lord. And then Srila Prabhupada is saying, the more one hears about God, the more one hears about Krishna, the more one becomes fixed in devotional service. So hearing from Bhagavad Gita, Bhagavatam, and hearing always in the association of devotees. That is the way we hear from the devotees, because the devotees understand Krishna, so they can tell us about Krishna. Somebody who does not understand Krishna, we will not be able to understand Krishna from them. So we need to hear about Krishna from the devotees who are really anxious to be in Krishna consciousness. Krishna is telling Arjuna, I am telling you this knowledge of Bhagavad Gita because you are very dear to me. So we can see that we are all dear to Krishna. That's why he's left this message of Bhagavad Gita for us, to hear this Bhagavad Gita. Krishna wants each and every one of us to come back home, back to Godhead. So we continue to hear and chant regularly.
hearing and chanting, taking instructions of a pure devotee. So we'll stop here for today. Thank you so much हाँ for listening and joining in. Srila Prabhupada ki jai. जय और भक्तों की जय. हरे